interfacing. Okay, the subject is divided into two parts. The first part is a microprocessor. The second part is a peripherals and interfacing. So what is microprocessor, what are peripherals, and its interfacing with microprocessor, we are going to discuss in this subject. So now you can see here, this is your scheme. Okay, you can see here microprocessor, peripherals, and interfacing. This subject has a theory, 3 hours of theory. Then practical hours, there will be 2 hours of practical. Then it has 4 credits. Apart from that, it has 100 marks. The 100 marks are divided like this: 20, 20, and 60. 20 will be your ISC. Then 20 will be your IE, okay, and theory exam will be of 60 marks. Apart from that, there will be a practical and oral examination that will be carrying 25 marks, and term work will be 25 marks, okay. So in all, there are 150 marks for this subject. Myself, Rupali Mane, I am teaching in this college since 2010. So in this college, total 11 years of experience, total 17 years of experience, actually speaking. I'm working as a training and placement coordinator apart from assistant professor. So I am looking towards training as well as placement activities. So definitely we'll be in touch during your third year, during your final year for your placements. Okay, so this is subject introduction. So in this subject, first of all, we are going to learn what is microcomputer, what is input-output devices. Now in this subject, the basic microprocessor which has included, that is 8086 microprocessor. Basically, it is a 16-bit microprocessor, okay? So in this subject, we are going to learn the architecture part of 8086, then programming, I mean the instruction set of 8086. Then apart from that, we are going to study how it manages interrupts, okay, and the related topics to it, okay. So now apart from that, will be a study of 8086 microprocessor. And along with that, earlier there was 8087, okay, but now in this year, we are excluding this 8087. Apart from that, there will be peripherals like 8255, then your 8279, then 8259. These are the peripherals which are working along with microprocessor. And what are those peripherals that we are going to learn, okay? Then the very important part, and that is nothing but programming of 8086, okay? So first of all, we are going to understand the instruction set of 8086, and then after that, we'll start with small programs. We are going to write programs for various applications. Then this is the prerequisite. You might have studied, I mean, you have studied your digital electronics in your third semester, okay? So in that you have studied various gates, then resistors, then memory, and the basic electronic devices, okay? Jaise LED hai aapka. Okay, so these are some of the basic things which are required to understand this subject, okay? So basic logic gates, you might be knowing NOT gate, NOR gate, NAND gate, AND gate, OR gate, okay? So sabka truth table kya hota hai, that you must know, okay? Then apart from that, there are various resistors, okay? So I'm not talking about electronic hardware resistors. I'm talking about digital resistors, okay? So what is the function of those resistors, okay? What is the function of memory unit? So that you should be knowing. And the basic electronic devices, jaise aapka diode hai, transistor hai, LED hai, okay? So that you should be knowing, okay? Okay. So this is now I'll give you the chapter wise syllabus briefing, okay? So in the first chapter, your first chapter is Introduction to Microcomputer System, okay? In this chapter, we are going to, or in this module, we are going to study a basic block diagram of microprocessor based system, okay? What is microprocessor and what is microprocessor based system, that we are going to learn, okay?
Then after that, we are going to study various input-output devices. Okay. Then after that, we are going to study the concept of address bus, data bus, control bus, and what is tri-state logic. Okay. Then after that, we are going to study assembly language, what is a low-level language and what is high-level language. Okay. Then assembly language comparison with high-level language. And then after that, assembler and compiler. Okay. So what is the function of assembler? What is the function of compiler? That we are going to study. Okay. Then this chapter is very easy chapter, chapter number 1. And almost 8 marks are there for chapter number 1. Okay. And that is very, very easy. Okay. So entire theory part is there. Okay. Then apart from that, second chapter, that is architecture of 8086 microprocessor. Okay. So first of all, we need to understand what is microprocessor. Okay. And then 8086 microprocessor. Okay. So in this chapter, we are going to study what is 8086 microprocessor, what is its architecture. Okay. Now question arises, what do you mean by architecture? These are very new terms to you. Okay. Architecture का मतलब है basic block diagram of 8086. 8086 के अंदर कितने ब्लॉक्स हैं, कौन कौन से ब्लॉक्स हैं, हर ब्लॉक का क्या फंक्शन है, हर ब्लॉक का क्या यूटिलिटी है, that we are going to study in architecture of 8086 microprocessor. Okay. So now 8086 microprocessor has 2 modes. The first one is a maximum mode and the other one is minimum mode. Okay. So we are going to study what all pins are there in maximum mode and minimum mode. Okay. So in this 8086 IC रहता है, it is a 40 pin IC. एक छोटा IC रहता है, 40 pins है उसमें. Okay. And each pin has its own function. Okay. Different function है. हर एक pin का एक function है. So what is that function? Okay. So that we are going to study in this chapter. This chapter is very, very important chapter. Okay. Then, okay. Then the third chapter, instruction set and programming of 8086 microprocessor. Okay. So first of all, we need to understand what are the addressing modes of 8086. Okay. Then we are going to study the various instructions. पहला है data transfer instruction है. Then arithmetic instructions है, logical instructions है, delay instructions है, string manipulation, stack and subroutine instruction है, input output instructions है. So the entire instruction set going to write assembly language programs for various applications. Okay. So ये सब chapters का weightage ज़्यादा है. Chapter number 2, chapter number 3. Okay. Then after that, peripherals and interfacing. Okay. So now 8086 अकेला काम नहीं करता है. Okay. 8086 के साथ एक team रहता है. Okay. So which all peripherals can be interfaced with 8086. Okay. So which are those peripherals? For example, आपका 8255 है, 8259 है, then 8279 है. So what are their functions? How they work? Okay. What are those ICs? Okay. उनका pin configuration क्या है? That we are going to study in this chapter. Okay. Then after that, very, very important thing. This word is what? Analog word, sorry, digital word. Okay. So everything, whatever you are noting, you are converting that data into digital form. Okay. Once the data is in digital form, then तुम data के साथ कुछ भी कर सकते हो, कैसे भी खेल सकते हो. So what is important? Data should be in digital form. Okay. So whatever data, analog data, is there that needs to be converted to digital form, and then that can be given to the microprocessor. Microprocessor is a digital device. Okay, it works only on 0 and 1. Okay, उसको 0.5 क्या है मालूम नहीं है. Okay, उसको सिर्फ low and high मालूम है, 0 and 5 मालूम है. Okay, so it deals with square wave only. Okay, so उसको analog signals मालूम नहीं है. So what is important? The important thing is that we need to convert this analog signals to digital form. Okay, and which IC is gives this functionality, that is 0809. Okay, there are many ADCs, but हम एक reference के लिए हम एक IC देखेंगे. Okay. Then digital to analog converter. Okay, so now the data is in digital form. Okay, but I need to convert that data into analog form. Okay, so for some applications, in that case, we are going to use DAC. Okay,
So what is that DAC? What are the pin functions? How it can connect with 8086 microprocessor? How it can be interfaced with 8086 microprocessor? That is important. Okay. Then after that, chapter number 6, that is module number 6, 8086 memory interfacing. Okay. So in this case, in this chapter, we are going to we are going to interface memories, various memories, 4 kilobyte, then 16 kilobyte, 8 kilobyte memories to 8086 microprocessor. Okay, and various configurations we are going to see, various mappings we are going to see here in this chapter. Okay, so this is about all 4 modules. Okay, these are some of the books. Okay, important books. Now to your textbooks, you can see here. I will prefer this Douglas Hall. Okay, then Gibson bhi acha book hai. Okay, so you can all these books are available in our library. Okay, if you find feasible, then you can visit to our library and you can issue those books. But I will suggest that please don't learn from notes. Okay, notes will be there for your reference. Okay, please learn from textbook. Textbook से पढ़ोगे तो ही तुम कुछ learn करोगे. Okay, and as I'm a placement coordinator, I know what kind of questions are asked in the interview. Okay, so as you are from electronics and telecommunication branch, okay, and there are many placement opportunities in IT and IT enabled sector. Okay, so whenever you are going for interviews, the majority of the questions will be on your basic electronics and microprocessor. Okay, so this chapter is very important for your career. When you are going to design your applications, कुछ product design करना चाहते हो, so in that case you require microprocessor and microcontroller. Okay, so next semester you have one more subject, that is micro MCN, microcontroller applications. In that subject you need the basic of this subject. Okay, so at that time we are not going to explain you what is address bus, what is data bus. Okay, what is the difference between microprocessor and microcontroller. Okay, yeah, all these things you should be knowing. So this chapter is very important. सिर्फ score करने के लिए मत पढ़ो. This subject is important for your career as well. Okay, so these are some of the reference books. You can take this screenshot. Okay, these are some of the websites and online material. Okay, now what are the objectives of this course? Okay, the first objective is to understand the basic concept of microcomputer system. Okay, so first of all, you need to understand what is microcomputer. So this subject will give you understanding that what is microcomputer and what are the basic blocks of microcomputer. Then to develop subject background, so develop background knowledge and core expertise in 8086 microprocessor and peripherals. Please remove this coprocessor 8087. Okay, we are not going to see coprocessor 8087. 1 second. Then after that, we are going to talk about assembly language program for 8086 microprocessor, and then to understand the peripheral devices, as I explained you, various peripheral devices, 8255, 8279, 8259. Okay, so these are the course objectives of this subject. Okay. Then these are some of the outcomes after learning this subject. You will be able to understand what is the basic concept of microcomputer, then the software aspects of 8086, then assembly language program. You can write assembly language programs using 8086, then interface peripherals for 8086, and design elementary aspects of microprocessor based system. Okay. Okay, these are some of the learning objectives based on your COs. Okay, so this is the experiment list. Actually, there are 15 experiments मैंने यहाँ पे दिए हैं. But apart from this 15, among these 15 experiments, we are going to conduct 10 experiments. Okay, so we are going to write the program in assembly. First of all, we will create a flow chart. We'll draw a flow chart.
according to the problem statement. Then after that, we'll write the assembly language program, and then we will execute that program, okay, to verify the result. हमने जो program लिखा है वो बराबर है या नहीं, वो दे रहा है या नहीं वही result, okay, so that will be verified with the help of assembly language, during your practicals, okay. Okay. Then ये सारे practical के time पे मैं instructions दूंगी. Okay. So these are the various projects you can take: medical, automobile, agriculture, consumer, industrial, electronics, then aviation, transport. Okay. So in सब में आप microprocessor, microcontroller use कर सकते हैं. So it is expected that your attendance should be minimum 75%. Actually, it should be 100%, 25% in case of emergency. आप बीमार हैं, कहीं जाना है आपको. So in that case, that's why that margin is there. Then you should complete your journal on time in given period of time, and you should take running notes. For example, definition, keynotes. मैं कुछ topic important topics से बोलूँगी. Okay, कुछ topics मेरे PPTs में नहीं रहेंगे. Still, I am explaining those topics. Okay, so in that case, you should take the running notes. ठीक है? So this is about the orientation program. Okay, subject orientation program. Now we'll start with our first chapter. Okay, okay, I'll stop share and I'll share PPTs of chapter number 1. Till this point, if you have any doubt, you can raise your hand. Yes, Shivansh, Shriya, Rutu, Siddhant. If you have any doubt, shall I move ahead? Yes, ma'am. Yeah, okay, Yes, good. Thank you. Is it visible to everyone? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yeah, good. Thank you, Shriya. Okay. So this is your chapter number 1 or module number 1, Introduction to Microcomputer System. Okay. Okay. So the outline of this presentation is, or in this presentation, we are going to, or in this chapter, we are going to cover the basic objective, then microprocessor based system, microprocessor, bus structure, memory, and input-output devices. Okay. So as I explained you earlier, the objective of this chapter is students will be able to understand the basic concepts of microcomputer system and to understand the concept of microprocessor, bus, memory, input-output devices. Okay, so these are the various applications. Okay, now let us discuss about microprocessor. तुम लोग बोलोगे कि मैडम इतनी देर से माइक्रोप्रोसेसर म्यूपी, माइक्रोप्रोसेसर को ही म्यूपी बोलते हैं. ओके, सो इतना देर बात कर रहे हैं, एक्चुअली ये माइक्रोप्रोसेसर है क्या? ओके, सो नाउ सपोज इफ आई एम गिविंग 100 numbers to a calculator. Okay, I am entering 100 numbers to a calculator. Okay, and I am saying that add 10 numbers. Okay, is it possible कि calculator 10 numbers नहीं add करेगा? वो कितने numbers add करेगा? 100 numbers add करेगा ना? But I want the addition of first 10 numbers. I am applying 100 numbers. Okay, but the calculator should add only 10 numbers. What is my requirement? My requirement is that I am entering 100 numbers to a calculator. Okay, or in the calculator. Okay, but I want on addition of first 10 numbers. Is it possible in calculator? Yes, Shriya. Calculator अपने आप से सिर्फ 10 number लेके रुकेगा क्या? No, it is not. You have to give them the instruction. हाँ, right. Okay, so it is not possible. Okay, so but if I am writing a program to a microprocessor, okay, and if I am saying I mean I am giving instructions to the microprocessor by setting a counter. Okay, it has to take only 10 numbers. Okay, and it has to add 10 numbers. Okay, although I am entering 100 numbers, okay, it will add only 10 numbers. Okay, so this is the biggest difference between your calculator and microprocessor. Okay, the decision making ability, what I am saying,
the decision making ability is possible in microprocessor, whereas that is not available in your calculator. ठीक है? Okay. So देखो microprocessor क्या है? Smart है. Okay. Why he is smart or why it is smart? Because the decision making ability is with your microprocessor. Okay. So that's why this is a smart device. Okay. So microprocessor, what is the function of microprocessor? The microprocessor क्या करता है? Microprocessor will receive data, okay, through input devices, okay, then processes that data as per the instructions stored in the memory or as per the instructions given, okay, and gives output. Okay, so this is the definition of microprocessor. Okay, so now let us give the analogy of human being. Okay, so now human brain, sorry, not human being, human brain. Okay, so now suppose, for example, if there is a hot iron, okay, and if I'm keeping my hand on hot iron, what will happen? What will happen? मैं वहां पे रखूंगी हाथ? No, it is not possible. Within a 5 to 10 seconds, okay, within a fract, you can say that very small amount of time, okay, I will remove that hand. Okay, so how it is possible? It's possible. Reflex action. Yeah, it is how it is possible, because see, my skin is what? It is a sensor, isn't it? बराबर? Okay, so it is a sensor. मेरा skin क्या करेगा? Device को एक मिनट है, मैं पहले stop करती हूँ. Okay. So what will happen? मेरा skin क्या करेगा? मेरा skin it will share sense, okay, the temperature sense करेगा. Okay. Now skin के नीचे क्या रहते हैं? There are nerve cells. Okay. वहाँ पे क्या है? Nerve cells है. So skin and all these nerve cells are connected to each other. Okay. पहला cell दूसरे से, दूसरा cell तीसरे से, तीसरा cell चौथे से. Okay. So likewise there are a million nerve cells are there inside the body. Okay. And these nerve cells are connected together, and then finally they are connected to brain. Okay, so whenever I am keeping my hand on iron, hot iron, then what will happen? They will sense that temperature. Okay, now that temperature or that sense is sent to brain. Okay, now the brain is already programmed. Okay, the brain is already programmed. No, it is not bearable temperature. The brain will take decision, okay, कि उसका एक desired temperature है, okay, वहां तक वो क्या करेगा? वो बोलेगा कि bear करना है, इसके बाद bear नहीं करना है, okay. So it will compare with the desired one, okay. जो भी data brain के पास जा रहा है, जो भी temperature उसने sense किया है, so the brain will compare that, okay. Now that temperature is obviously high or greater than the desired one, then the brain will take the immediate decision. क्या immediate decision लेगा? कि remove that hand from there. Okay, so it will immediately nerve cell के through क्या करेगा? मेरे हाथ को signal भेजेगा. Again the nerve cells are connected. एक सेल दूसरे को, दूसरा सेल तीसरे को, तीसरा सेल चौथे को, ऐसे करते करते कहाँ तक पहुंचेगा? मेरे हाथ तक पहुंचेगा. And immediately I will remove that hand. So see, within a fraction of seconds, the brain is taking this decision. Okay, the microprocessor does exactly the same thing. Okay, so microprocessor क्या करता है? If I am connecting a I'm sorry, if I am connecting a sensor to the microprocessor, for example, temperature sensor मैं connect कर रही हूँ microprocessor को, तो microprocessor क्या करेगा? माइक्रोप्रोसेसर विल रिसीव टेम्परेचर, जो भी टेम्परेचर सेंसर टेम्परेचर सेंस करेगा वो रिसीव करेगा. It will compare with the desired one. I am a programmer, okay? So now I want to set the room temperature. कितना set करना है? 24 degree. Okay, so I will give 24 degree through my programs. Okay, so microprocessor क्या करेगा? It will receive the room temperature by 24 degree continuously. When the temperature is greater than this 24 degree, it will send immediate signal to the AC to get switch on. Okay, to get switch on. I mean, we need to design such a system. Being a designer, I will design such
blocks, okay, and I will design a system and I will write a program, okay. So this is a function, this is a responsibility of designer, okay. So what is the function of microprocessor? The function of microprocessor is to receive data, okay, to receive data through input devices, okay, then processes that data as per the instructions given, okay. अभी data क्या receive किया? Temperature monitoring system और temperature control system में data क्या है? Data is nothing but the received temperature, okay. Temperature कौन दे रहा है? Temperature आपका जो ये है सेंसर है वो क्या कर रहा है? टेम्परेचर दे रहा है। किसको दे रहा है? माइक्रोप्रोसेसर को। माइक्रोप्रोसेसर वो टेम्परेचर किसके साथ कंपेयर कर रहा है? डिजायर टेम्परेचर के साथ। डिजायर टेम्परेचर किसने सेट किया है? प्रोग्रामर ने, ओके, डिजाइनर ने, okay. So now it will compare with that temperature, okay. If the temperature is greater, then there is a provision, okay. क्या provision है? Provision है कि this switch AC क्या होना चाहिए? Switch on होना चाहिए, okay. So microprocessor is a device which receives data through input devices, okay, processes that data as per the instructions given, okay, and gives output, okay. So I hope you followed this concept. Yes, yes, Utkarsh. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yeah, ma'am. 821, then Abhay, Shriya, okay, then Manasi. If you have any doubt, you can ask here. Siddhant. Okay, so are you getting of human being? Okay, so you can read for more examples. Okay, so this is what Ma'am. processor. हाँ जी, yes. जो प्रोसेस करता है तो इनपुट हम लोग देते हैं कि ऑलरेडी उसमें प्रोग्राम रहता है? नहीं, ऑलरेडी प्रोग्राम नहीं है, ओके। अभी मैंने एक सिस्टम डिजाइन किया है। कौन सा सिस्टम डिजाइन किया है? इफ आई हैव डिजाइन विद टेम्परेचर मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल, ओके। तो मैं क्या करूंगी एज अ बीइंग अ डिजाइनर, मैं क्या क्या लगाऊंगी? पहले आई विल टेक अ माइक्रोप्रोसेसर। अपार्ट फ्रॉम दैट, हु इज अ टेम्परेचर सेंसिंग डिवाइस, ओके, that temperature sensor I will take, okay. I will interface that temperature sensor with microprocessor, okay. Apart from that, मैं क्या करूंगी? मेरा AC का स्विच है, okay, so वो क्या करूंगी? I will interface with microprocessor, ठीक है। so ये मुझे being a designer, being a programmer, okay, being a system designer, I need to first of all set this way and then I have to write the program, okay. फिर मैं प्रोग्राम लिखूंगी, सो दैट प्रोग्राम विल बी देयर इज अ प्रोविजन, ओके। आप प्रोग्राम लिखो एंड दैट प्रोग्राम विल बी स्टोर्ड इन अ मेमोरी, ओके, मेमोरी में स्टोर करें, ओके। जैसे ही मैं सिस्टम को ऑन करूंगी, व्हाट विल हैपन, ओके, कंटिन्यूअसली इट विल मॉनिटर द टेम्परेचर, ओके, कंटिन्यूअसली इट विल सेंस द टेम्परेचर ऑफ दैट रूम, ओके। इफ दैट टेम्परेचर इज 18 डिग्री है, 20 डिग्री है, 21 डिग्री है, देन 24 डिग्री है। Now, through programming, I have given that the temperature should not be greater than 24. मुझे रूम का टेम्परेचर 24 डिग्री सेट करना, okay. So in that case, what will happen? It will, if the temperature is greater than 24, the program is written in a such a way that if the temperature exceeds 24 degree, which is a desired one, automatically it will send signal to AC switch, okay. रिले कनेक्ट करूंगी AC switch के साथ, तो रिले ऑन होगा। रिले ऑन हो गया तो आपका स्विच क्या होगा? ऑन होगा, एसी ऑन होगा। कंटिन्यूअसली एसी ऑन है तो अभी टेम्परेचर कितना हुआ था? 25 डिग्री हुआ था और इट इज ग्रेटर दैन 24 डिग्री। तो जब तक टेम्परेचर वापस 24 तक नहीं आता है, वो एसी को स्विच रखेगा। एज सुन एज 24 डिग्री से टेम्परेचर 24 डिग्री हो गया, इट विल अगेन सेंड सिग्नल टू एसी। क्या करेगा? ऑटोमेटिकली वो क्या करेगा? उसको ऑफ करेगा। सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज अ माइक्रोप्रोसेसर बेस्ड सिस्टम, ओके। So this is one of the example, okay. So everywhere you require this microprocessor and microcontroller. Morning से लेके evening तक आपको microcontroller, microprocessor चाहिए ही चाहिए, okay. So everywhere it is required, okay. आपके phone में है, okay. Then washing machine में है, then आपका gym में जाओगे आप, वहाँ पे है वे अलग-अलग instruments रहते हैं, cardio करने के लिए आप treadmill use करोगे, वहाँ पे रहेगा, then car में है, okay. So everywhere this microprocessor and microcontroller system is there, okay. So now today's devices are smart devices, okay. Why we are saying that smart devices? Because there is an inbuilt microprocessor or microcontroller, okay. So those microprocessor and because of those things, because microprocessor and microcontrollers are able to take the decisions, okay. So we can program them, okay. हम उनको program कर सकते हैं,
Okay, so that's why the decision making ability is possible with those devices. Okay, कोई भी हमने application design किया तो that is possible. Hence these devices are called as smart devices. Okay, nowadays these devices can be so now the technology is so fast, or it has changed to now the devices are connected to IoT. Okay, मैं यहाँ पे बैठ के मेरे घर का AC क्या कर सकती हूँ, on off कर सकती हूँ. Okay, so for example now the devices are communicating with each other. Okay, for example now now there will be a system. Okay, there will be a system. How it will be now, for example मैं घर पे आती हूँ कितने बजे, 6 o'clock. ओके, और तो 6 o'clock इफ आई एम रीचिंग होम. ओके, एंड मेरे घर का जो शॉवर है वो बाथरूम का शॉवर फॉर एग्जांपल 6:30 को उसको ऑन होना है. ओके, बिकॉज आई एम रीचिंग एट 6 o'clock. ओके, बट इन फ्यू डेज इट विल हैपन if I am coming by train, okay, or if I am coming by car. Okay, so it will check the Google traffic. Okay, if there is a traffic तो मैं 6 o'clock पहुंचने की जगह पे इफ आई एम रीचिंग अराउंड 6:15 तो 15 मिनट्स का डिले हो गया. सो इंस्टेड ऑफ 6:30 दैट शॉवर विल गेट ऑन बाय 6:45. Okay, so in this way in few years the devices will start communicating with each other through network. Okay, so that is possible because of this microprocessor and microcontroller. Hence this subject is very very important and very very interesting. Okay, so please pay attention. स्टार्टिंग से तुम अटेंशन दोगे, तुमको समझने लगेगा, then it will automatically generate interest. Okay, ठीक है. So now I'll once again share screen. Yeah. Okay, so these are some of the applications where this microprocessor is used. It is used in frequency counter, function generators, frequency synthesizers, spectrum analyzers, then medical telephone, then telephone exchanges, television, satellite communication. कहाँ नहीं है वो बोलो. Okay, microprocessor and microcontrollers are everywhere in each application. Okay. Now you can see this is the microcomputer. Now there will be 8 marks or 5 marks question. Okay, draw the basic block diagram of microcomputer and explain the function of each block. Okay, so in that case, how you are going to write down your answer? You are in second year. Okay, so now you are mature enough. First year में थे तब आप छोटे थे. Okay, लेकिन second year में अभी now you are mature enough. So how to write down the answer? Okay, first of all you need to write down what is microcomputer. Okay, or what is microprocessor based system. Okay, so first of all you need to write that. Okay, then after that you need to tell that there are the important blocks of microcomputer or important blocks of microprocessor based systems are microprocessor, input devices, output devices, and memory unit. Okay, now then you should talk about microprocessor. Okay, so what is microprocessor? It is the brain of computer. It is also called as a CPU. CPU का मतलब क्या है? Central Processing Unit. Okay, it is a single chip. देखो जो एक ब्रेन है, you look at the VLSI technology. Okay, इतने सारे सर्किट्स, मतलब अर्लियर यू माइट बी नोइंग द साइज ऑफ कंप्यूटर एक रूम के जितना साइज होता था. ओके, नाउ इट हैज रिड्यूस्ड टू नाउ यू नो दैट आपके पास पाम टॉप्स हैं, फिर लैपटॉप्स हैं, फिर आपका डेस्कटॉप है. नाउ यू कैन सी द साइज. ओके, it is reduced a lot. Okay, so that is possible with the help of VLSI technology. Okay, there are many devices which are integrated on a single chip. Okay, so that is CPU, that is Central Processing Unit. So your आप मैं जो microprocessor बोल रही हूँ वो microprocessor कौन है? Microprocessor is nothing but a CPU. Okay, microprocessor is nothing but a CPU. Then next is what? It is a programmable device that accepts digital data as an input. Okay, क्या करता है ये microprocessor? It is a programmable device. Very very important characteristics. Okay, it is a programmable device. Device क्या कर सकता है? हम प्रोग्राम कर सकते हैं. Okay, and that accepts digital data as input. Okay,
it has a bus. It has a bus structure, data bus and address bus. Okay, so data bus का function क्या है? The function of data bus is to transfer data. Okay, is to carry data. Okay, and that is possible. And because of this data bus, it can accept digital data as an input. Okay, then example of sequential digital logic as it is an internal memory. Okay, then it perform arithmetic operations, transfer data and make decisions. Okay, this is very important. इसके अंदर एक यूनिट दिखा है तुम लोगों को. ओके, यहाँ पे देखो ALU दिख रहा है. ALU का मतलब क्या है? Arithmetic Logic Unit. Okay, it performs various arithmetic and logical operations. You might have heard or in your digital electronics तुमने एडर देखा होगा ना, हाफ एडर, फुल एडर. ओके, सो बेसिकली इनके एप्लीकेशंस क्या होते हैं? ओके, बेसिकली इसका एप्लीकेशन ये जब बिग डिवाइसेस मतलब माइक्रो प्रोसेसर जब डिजाइन होता है तो वो जो एडर का सर्किट है वो यहाँ पे यूज होता है. ओके, सो सेकेंड ईयर में यू आर गोइंग टू लर्न दोज सब्जेक्ट्स. ओके, थर्ड ईयर में उसके एप्लीकेशंस आप पढ़ोगे. ओके, सो दैट यू विल कम टू नो व्हाट इज इट. ठीक है, then it performs arithmetic operations, logical operations, data transfer and it make decision. Okay, it has an address bus as well as data bus. Address bus is to carry address and data bus is to carry data. Okay, so what is address bus, what is data bus, we'll discuss that later on. Okay, basically address bus क्या है? See, इसको ना it is called as a brain of computer. Okay, लेकिन उसको क्या करना पड़ता है? Proper instruction देना पड़ता है. Okay, then it will work. If you are not giving proper instructions, it will not work. Okay, if I am storing data at C000, okay, and if in the program if I am writing it as C001, okay, so it will go to only C000. Okay, because I have written it will go to C001. ओके, बिकॉज मैंने प्रोग्राम में क्या लिखा है? C001 लिखा है. उसको इतना समझ नहीं है कि वो डेटा इज स्टोर्ड इन C00, बाय मिस्टेक C001 बोल रही हूँ. It is not like that. Okay, it will look for C001. It will not look for C000, although the data is stored there. Whatever I am giving in the program, okay, it will work accordingly. जैसे हम इंस्ट्रक्शंस देंगे वैसे वो क्या करेगा? काम करेगा. ठीक है. Okay, then the next unit now microprocessor. So first of all you are going to talk about microprocessor. It is a brain of computer. Okay, it accepts digital data, processes that data as per the instructions stored in the memory and gives output. Okay, this is a basic definition of microprocessor. Okay, microprocessor के function है, it performs arithmetic functions, logical functions. Okay, then it receives digital data, then it processes that data, it makes these are some of the functions of microprocessor. Okay, so now you can see here arithmetic logic unit. It has three parts or it has three blocks. The first one is ALU, then second one is control unit, and the third one is a register array. Okay, so ALU performs all arithmetic and logical operations on the data received from input. Then control unit controls the flow of instruction and data throughout the system. Okay, this is a function of control unit. It controls the flow of instruction. मतलब suppose मैंने for example I want to add two numbers, तो मुझे क्या करना चाहिए? First of all I need to give enter those numbers, then after that I need to give add instruction, and then I need to give out instruction. Okay, suppose मैंने पहले out instruction दिया. Okay, if I am giving first, if I am writing out instruction, then बाद में add instruction और बाद में नंबर से एंटर कर रही हूँ, चलेगा क्या? नहीं चलेगा. आई नीड टू राइट a program in a proper sequence. Okay, and microprocessor will execute that sequence, that program in a sequence in a sequence whatever we have provided. Okay, so who is taking care of that? Okay, सीक्वेंस में जो मैंने इंस्ट्रक्शंस दिया है वो इंस्ट्रक्शन के सीक्वेंस में मेरा प्रोग्राम क्या होना चाहिए? एग्जीक्यूट होना चाहिए. Who is taking care of that? That take care is taken by your control unit. Okay, then after that there is a register array. Okay, so register array, there are various internal registers. Can anyone tell me the function of register? Yes,
To store data. Sorry. To store data. Yes, okay. It store data, okay. So this microprocessor has some internal registers, okay. So for example, accumulator hai, register B hai, okay. So these are the registers which are used while doing the programming, okay. Programming के लिए हम क्या कर सकते हैं, ये रजिस्टर्स यूज कर सकते हैं, ओके. टेम्पररी स्टोरेज के लिए हम ये डेटा रजिस्टर्स क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं. सो दैट इज रजिस्टर एरे, ओके. आपने कोई भी माइक्रो प्रोसेसर किया, ओके, कोई भी माइक्रो प्रोसेसर लिया, so it will be having these three basic units, okay. Which are those three? Arithmetic and logical unit, the second one is a control unit, and the third one is a register array. कोई भी माइक्रो प्रोसेसर ले लो आप, 8085 ले लो, 8086 ले लो, 8286 ले लो, Pentium ले लो, okay. So everywhere, whatever it may be there, the microprocessor will be having these three units, okay. Now, as I explained you earlier, a microprocessor takes input from input devices, processes it as per the instructions given in the memory, and produces output. Okay, so now you can see here, this is your CPU, these are the buses, okay, and this is the RAM. Okay, so this is nothing but your microprocessor based system. Okay, अभी इसके साथ कौन connect रहता है, एक मिनट. ओके, अभी इसके साथ कौन कनेक्ट रहेगा, आपका इनपुट डिवाइस रहेगा. ओके, इसके साथ कौन कनेक्ट रहेगा, आपका आउटपुट डिवाइस रहेगा. गॉट इट. और ये आपकी क्या है, मेमोरी. ठीक है. सो दिस इज सीपीयू, this is input device, this is output device, this is memory, and this is nothing but your bus structure. Microprocessor based system. Got it? Ma'am, can you just explain what exactly the data bus do? Yeah, I. Okay. Okay. So now you can see here, this is the data bus. Okay, so basically the function of data bus is to transfer data. Okay, data bus is a bi-directional. Bi-directional मतलब क्या करेगी, माइक्रोप्रोसेसर से डेटा कहाँ जाएगा, मेमोरी में जा सकता है, मेमोरी से माइक्रोप्रोसेसर में आ सकता है. फिर मैंने यहाँ पे इनपुट आउटपुट डिवाइस निकाला था, इसके साथ भी कनेक्टेड रहता है डेटा बस. ओके, तो इनपुट आउटपुट डिवाइसेस क्या है, इधर से माइक्रोप्रोसेसर में जाएगा. फिर यहाँ पे हमने क्या कनेक्ट किया है, आउटपुट डिवाइस कनेक्ट किया है, तो यहाँ से डेटा यहाँ जा सकते हैं. ओके, फॉर एग्जाम्पल सपोज मेरा ये इनपुट डिवाइसेस मतलब कौन है, कीबोर्ड. ओके, नाउ व्हाट आई वांट टू डू, आई वांट टू ऐड टू नंबर्स. ओके, तो 8-bit नंबर है, तो माय फर्स्ट नंबर इज 05 and the second number is what, 03. Okay, and I want to add these two numbers. Okay, so what I will do, I will write a program. मैं इसके लिए प्रोग्राम लिखूंगी, but this program where it will be stored, it will be stored here in the memory. Okay, read write memory में ये क्या होगा, स्टोर होगा. Okay, तो मैंने प्रोग्राम लिखा है कि take first number, take second number, then add them. Okay, add करने के बाद क्या करो कि वापस मेमोरी में रख दो. ठीक है, ये रखा है. ओके, सो पहला टेक फर्स्ट नंबर इज फ्रॉम वेयर, इट हैज टू टेक दिस फर्स्ट नंबर फ्रॉम मेमोरी से फर्स्ट नंबर ले. सेकंड नंबर, टेक सेकंड नंबर फ्रॉम मेमोरी, देन ऐड देम. ओके, ऐड किया, जो भी रिजल्ट आया वापस मेमोरी में स्टोर. ओके, सो दिस प्रोग्राम आई हैव रिटन. ओके, सो नाउ व्हाट दिस सीपीयू विल डू, एज सून एज मैंने एक प्रोग्राम लिखा, प्रोग्राम लिखने के बाद मैंने एग्जीक्यूट कमांड दबाया, उसको कंपाइल वगैरह करके एग्जीक्यूट कमांड दबाया. ओके, सो एज सून एज आई गिव एग्जीक्यूट कमांड, ओके, इट विल गो टू फर्स्ट इंस्ट्रक्शन. ओके, माइक्रोप्रोसेसर विल गो टू फर्स्ट इंस्ट्रक्शन. व्हाट इज दैट इंस्ट्रक्शन, टेक फर्स्ट नंबर फ्रॉम द मेमोरी. ओके, मेमोरी का कौन सा लोकेशन से, एक लोकेशन दिया है, मेमोरी का एक पॉकेट है. ओके, ये पहला पॉकेट है, उसका एड्रेस दिया है. सो व्हाट दिस माइक्रोप्रोसेसर विल डू, माइक्रोप्रोसेसर विल सेंड एट दैट एड्रेस टू दिस मेमोरी. मेमोरी क्या करेगा, वहां से ये पॉकेट से नंबर उठाएगा. ओके, डेटा बस पे डालेगा,
और डेटा बस से कहा जाएगा, इट विल कम टू inside the microprocessor. Okay. Then my second instruction is what? Second number, second pocket में. Okay. So microprocessor will send address to the here. ये pocket का address भेजेगा. यहाँ से number उठे निकलेगा. ये डेटा बस पे जाएगा. Again it will come inside. Okay. Now the 05 is inside the microprocessor. 03 is inside the microprocessor. Then my next instruction is what? Add. Okay, microprocessor समझेगा add करना है इसको, ये जो दो numbers आए हैं उनको. So again it will add those numbers. Okay. So now the next instruction is that store that number into third pocket. Third pocket में क्या करना है? जो भी addition आया, whatever, what is that addition? The addition is what? 08. Okay. So ये 08 कहाँ पे store करना है? Pocket में store करना है. तो माइक्रोप्रोसेसर क्या करेगा? एड्रेस भेजेगा. ओके, साथ में डेटाबेस पे डेटा बस पे वो डेटा भी भेजेगा, दोनों जाएंगे, एड्रेस भी जाएगा. ओके, और डेटा भी जाएगा. जो डेटा माइक्रोप्रोसेसर अभी मेमोरी और मेमोरी को इंस्ट्रक्शन भेजेगा, मैं जो डेटा तुम्हें एड्रेस बस पे एड्रेस जो भेज रहा हूँ, ओके, वो एड्रेस पे जो भी डेटा बस से आएगा वो स्टोर करो. ओके, सो दिस 08 विल बी देयर ऑन द डेटा बस, और वो जो यहाँ पे डेटा स्टोर करना है, सो दैट विल बी ऑन एड्रेस बस. ओके, सो द माइक्रोप्रोसेसर इज गोइंग टू सेंड एड्रेस, एट द सेम टाइम इट इज गोइंग टू सेंड डेटा, एट द सेम टाइम इसका जो कंट्रोल सिग्नल है, ओके, वो मेमोरी को क्या बोलेगा कि राइट ऑपरेशन करना है. मीन्स वॉट एवर डेटा आई एम सेंडिंग ऑन द डेटा बस, ओके, यू स्टोर करना है, कौन से पॉकेट में स्टोर करना है, वॉट एवर एड्रेस आई एम सेंडिंग ऑन दी एड्रेस बस. एड्रेस बस पे मैं जो एड्रेस भेज रहा हूं वहां पे जाके क्या करो, सेव करो. ओके, सो दिस वे दे आर कम्युनिकेटिंग. ओके, सो जैसे मेमोरी राइट है, राइट मतलब राइट ऑपरेशन, डेटा मेमोरी में स्टोर करना है, सो दैट ऑपरेशन इज कॉल्ड एज द राइट ऑपरेशन. डेटा मेमोरी से रीड करना है, so that is called as a memory read operation. So every time this microprocessor is sending signal, address तो भेजेगा ही, okay, signal भी भेजेगा उसको कि रीड करना है या राइट करना है. रीड करना है मतलब मेमोरी से डेटा क्या करना है, रिट्रीव करना है, एंड राइट करना है मतलब वॉट एवर डेटा आई एम सेंडिंग ऑन द डेटाबेस, ओके, वो डेटा क्या करना है, स्टोर करना है. लेकिन स्टोर कहाँ करना है, इतने सारे पॉकेट्स है ना, इतने सारे पॉकेट्स दिख रहे हैं ना. ओके, सो कौन से पॉकेट में स्टोर करना है. ओके, सो व्हाट एवर एड्रेस आई एम सेंडिंग हियर, ओके, वो एड्रेस पे तुम्हें क्या करना है, सेव करना है. सो दिस इज व्हाट द माइक्रोप्रोसेसर कम्युनिकेट्स विद द मेमोरी एट द पेरिफेरल डिवाइसेस. ओके, आई गेस यू अंडरस्टूड इट. यस, यस, Yes, ma'am. क्लियर द डाउट हाउ Ma'am. इट वर्क्स. हाँ, मैम जो हम लोग डेटा भेज रहे हैं, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल है क्या कि यही सीक्वेंस में जाएगा, पहले फर्स्ट पॉकेट में स्टोर होगा फिर सेकंड? yes, there is a rule. There is rule in sense it will work as per the instructions. तुमने पहले Ma'am. 5 दिया तो वो पहले 5 लेगा, बाद में 3 दिया तो बाद में 3 लेगा. Suppose if you are giving first 3, then whatever there in the first instruction that will first of all execute. Okay, in a sequence. Who is going to maintain that sequence? The control unit is going to maintain that sequence. Yes, हाँ बोलो. Yes, कुछ डाउट है? मैम, हाँ, इधर हम लोग रैम यूज कर रहे हैं, तो हम लोग जब एक मतलब जो ऑन करने के बाद माइक्रो से तभी प्रोग्राम कर सकते हैं, और जब तक ऑन है तभी तक रहेगा ना वो, क्योंकि वो रैम है ना, तो अगर बंद किया तो वो डेटा निकल जाएगा ना. no, actually nowadays that storage facility is there. Okay, so actual speaking वैसे ही होना चाहिए, but nowadays the kit has a provision. Okay, कि रहता है वहाँ पे ड्यूटा. Actual speaking वो जाना चाहिए. मैम, और ये चिप में ही रहता है या मतलब हम लोग कंप्यूटर में रैम का अलग से स्लॉट रहता है, मतलब चिप में इंक्लूडेड नहीं रहता ना, तो माइक्रो प्रोसेसर में रैम उसके अंदर रहता है या बाहर हमसे? नहीं, माइक्रो प्रोसेसर के अंदर रैम नहीं रहता है. ओके, सो इट इज माइक्रो, दिस इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट फीचर. ओके, तो सीपीयू के पास क्या रहता है, सिर्फ क्या रहता है, एएलयू रहेगा, कंट्रोल यूनिट रहेगा और रजिस्टर्स रहेंगे. रैम रोम जो भी है वो बाहर रहेगा. इनपुट आउटपुट डिवाइसेस है जो बाहर है. So everything you need to connect externally. That's why the microprocessor based system. Okay, समझे आप? यस मैम.
Okay, so once again, see here. ये डायग्राम देखो, वन सेक, हाँ, ये देखो, ये डायग्राम देखो, दिस इज नथिंग बट अ माइक्रो प्रोसेसर. This is input device, this is output device, and this is memory unit. It is externally connected. It is not inside the microprocessor. So that's why I am saying again and again, microcomputer. Microcomputer मतलब उसके अंदर सारा कुछ है. ओके, लेकिन माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड सिस्टम में बोलूंगी तो उसके अंदर ये सारा कुछ आएगा. लेकिन whenever I am saying microprocessor, so microprocessor is a single unit. Okay, you need to connect input devices, output devices, and memory external. Got it? Okay. Yes, someone was asking some question. Yes, ma'am. मैम इधर रजिस्टर अरे और या फिर रैम में हम टेम्परेरी डेटा सेव कर रहे हैं, तो हाँ. वो डेटा एग्जैक्टली कैसे मतलब सेव होता है? लाइक एज फार एज नो कैपेसिटर में स्टोर चार्ज स्टोर होते हैं, बट स्टिल वो डेटा कैसे सेव होता है, बता उसके बारे में. See, you might be knowing the function of register. Register कैसे काम करता है? Try to understand that. Okay, and then you will come to know. Okay, so यहाँ पे register arrays है, तो टेम्पररी स्टोरेज होता है. ओके, सो उस पे ओवरराइट कर सकते हैं, उस पे ओवरराइट होता है. सपोज आई एम देयर आर रजिस्टर ए, रजिस्टर बी. ओके, इफ आई एम सेविंग डेटा इन रजिस्टर ए, ओके, एंड उसके बाद नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन आई एम सेइंग दैट फॉर एग्जांपल इफ आई हैव रिटन 03 इन रजिस्टर ए. ओके, तो रजिस्टर ए में डेटा कैसे सेव होता है, 03 कैसे सेव होता है? देखो, ये रजिस्टर है. ओके, तो इसमें कितने ये रहेंगे, बीट्स रहेंगे, 8 बीट्स रहेंगे. इट इज बिकॉज ओके, सो एक्चुअली AX रजिस्टर है. सो AX रजिस्टर इज a 16-bit register, but it is divided into 2 parts, AH and AL. Okay, this is AH and this is AL. ठीक है, so your AH will be 8-bit and AL will be 8. Okay, so now I am storing 03. Okay, तो ये 03 कहाँ पे स्टोर होगा? AL में स्टोर होगा. ओके, कैसे स्टोर होगा AL में? देखो, ये 8 रहेंगे, तो 03 का मतलब कितना होता है? ये these are 8. मैंने कितने निकाले? 1 2 3 4 5 6 7. ओके, सो these are nothing but 8. ठीक है, अभी 03 सेव करना है, तो ये 03 इंटरनली कैसे सेव करता है? देखो, 03 मैं बोलने के लिए 03 है, लेकिन इट्स अ हेक्स नंबर फॉर हिम. ओके, 0 0 0 0. ओके, 3 मतलब कैसे होगा? 0 0. 3 के लिए क्या होता है? 3 के लिए क्या होता है? 1 1 ना. यस मैम. हाँ, तो माइक्रो प्रोसेसर का जो AL रजिस्टर है उसके अंदर ये ऐसे से व्हाट इट 03 का मतलब. ठीक है, सो थोड़ी देर के बाद इफ आई एम अगेन राइटिंग दैट मूव AL 05, मतलब मैं इसको ओवरराइट कर रही हूँ, तो ये 03 की जगह 05 सेव होगा. तो यहाँ पे क्या होगा? 1 होगा, 5 मतलब यहाँ पे 0 होगा, और यहाँ पे क्या होगा? 1. Got it? यस मैम, बट स्टिल हम यहाँ पे मैम कॉलम बना रहे हैं, लाइक 0 and 1 की टर्म में बात कर रहे हैं. इलेक्ट्रॉनिकली वो कैसे मतलब सेव होता होगा? You read, you see, in that case, I need to explain you the function of register. Okay, आज आप घर जाओ और register के in register. Okay, so if you could read it and you could understand it, then that is fine. Okay, otherwise call me, I will explain. Okay, These registers are basically flip-flops, na? हाँ. So now just keep in mind that register में क्या होता है? Data save होता है, data store होता है. Okay, whatever we are storing, so that will be stored in the register. ठीक है, so moving ahead. आज आप पढ़ो, नहीं समझ में आता है, नेक्स्ट लेक्चर में आपको पूरा रजिस्टर समझा दूंगी, बट इट विल टेक टाइम. इसका ना सिलेबस बहुत ज्यादा है. मिस एक डाउट हाँ, वो आपने वो पिछले बार डायग्राम बताया ना वो रैम का, तो हमारे इसमें रोम का तो होगा, तो उसमें किधर ऐड होता है रोम? ये एक्चुअली ये दिखाने के लिए रैम दिखाया है. बेसिकली रैम और रोम दोनों होते हैं. ओके, सो रीड ओनली मेमोरी, वो जो प्रोग्राम में मतलब मैन्युफैक्चरर से जो प्रोग्राम्स आते हैं, सो ऑल दीज मॉनिटर प्रोग्राम्स आर देयर इन दी रोम. ओके, बट रैम में एज अ प्रोग्रामर, ओके, मैं क्या कर सकती हूँ? मेरा डेटा, मेरा प्रोग्राम जो भी मैं लिखूंगी दैट विल बी इन रीड राइट मेमोरी. ओके, रोम को हम एक्सेस नहीं कर सकते. एक्सेस इन सेंस
that is not for programming purposes. जो भी हमें प्रोग्राम करना है, whatever we want to write, whatever we want to store, we'll be storing in read write memory. ठीक है? Okay, ma'am. Thank you. Yeah. Okay. So now you can see here. Okay. So now it has a different functions. Okay. The first is the fetch. The second one is decode, and the third one is execute. Okay. The first one is store, fetch, decode, and execute. Okay. So these are the functions. Okay. Which works. Or these are the units who are performing these functions. Okay. Store मतलब क्या है? I will explain. Whenever I am writing a program, so that program will be in the memory. कहाँ पे होगा? That will be in the memory. Memory में होगा. Okay. जो भी मैं प्रोग्राम लिखूंगी यहाँ पे क्या रहता है? मेमोरी इज लाइक अ नोटबुक. ओके. उसके हर एक लाइन पे हम क्या कर सकते हैं? लिख सकते हैं. ओके. सो दिस इज अ मेमोरी. ठीक है. नाउ ये मेमोरी में क्या है? सो यहाँ पे मैं ज्यादा से ज्यादा कितना डेटा सेव कर सकती हूँ? आई कैन स्टोर ओनली 8 बिट्स. कितने डेटा स्टोर कर सकती हूँ मेमोरी में? आई कैन स्टोर ओनली 8 बिट्स. 8 बिट ही मैं यहाँ पे क्या कर सकती हूँ? आई कैन स्टोर. उससे ज्यादा नहीं. ओके. एंड इट हैज अ नंबर. ओके. हर एक नोटबुक का लाइन रहता है ना, लाइन नंबर 1, लाइन नंबर 2, लाइन नंबर 3, वैसे इसको क्या रहता है? नंबर रहता है. तो लेट अस स्टार्ट फ्रॉम 0 0 0. ओके. 0 0 0 0 0. Okay, the next is what? 0 0 0 0 1. Okay, so this will end up to F F F. Why I am saying F F F? Because we can interface 64 kilobytes of memory. That's why. Okay, 60, sorry, not 64 kilobytes, it's a 1 mega. Okay, क्योंकि इसमें एड्रेस बस कितने रैंक का रहता है? 20. So यहाँ पे 0, then यहाँ पे 0 0 0 1, then यहाँ पे F F F. ठीक है. Okay, so what is that? That I'll explain. Okay, just you keep in mind this number. ठीक है. So now whatever I am writing here, that data will be stored in memory. Okay. So whenever I give the execute command, what will happen? What will happen? माइक्रोप्रोसेसर क्या करेगा? यहाँ पे जो माइक्रोप्रोसेसर क्या भेजेगा मेमोरी को? ये मेमोरी है. ओके. और ये आपका माइक्रोप्रोसेसर है. यहाँ माइक्रोप्रोसेसर विल सेंड सिग्नल टू मेमोरी. ओके. कि तुम्हारे फर्स्ट लाइन पे जो दिया है वो अंदर दे दो. तुम्हारे फर्स्ट लाइन पे जो दिया है वो किसको भेजो? मुझे भेजो. ओके. ओके. माइक्रोप्रोसेसर क्या बोलेगा? as soon as I give the execute command, as soon as I give the execute command, microprocessor will send signal to memory. मेमोरी के पास सिग्नल भेजे. मेमोरी को बोलेगा कि तुम्हारे पहले लाइन पे जो लिखा है वो मुझे भेजो. ओके. तो मेमोरी क्या करेगी? उसके पहले लाइन पे जो भी लिखा है वो किस पे भेज डालेगी? डेटा बस पे डालेगी. और कहाँ पे भेजेगी? माइक्रोप्रोसेसर को भेजो. ले भाई, मैंने भेज दिया. तूने जो बोला था मैंने भेज दिया. ओके. अभी माइक्रोप्रोसेसर क्या करेगा? माइक्रोप्रोसेसर विल ट्राई टू अंडरस्टैंड, ट्राई टू डिकोड. ओके. फर्स्ट लाइन पे क्या है? फर्स्ट लाइन पे क्या इंस्ट्रक्शन दिया है? वो डिकोड करने की कोशिश करेगा. दैट एबिलिटी इज विद द माइक्रोप्रोसेसर. नाउ फेच. फेच का मतलब क्या है? फेच का मतलब क्या है? जाके लेके आना. So that is called as a fetch. Okay. So microprocessor is sending address. पहला एड्रेस भेजा 0 0 0 0 0 0 पे जो लिखा है वो मुझे भेज. And memory is sending that to microprocessor. This operation is called as a fetching. जो भी लिखा है उससे कुछ लेना देना नहीं है, सिर्फ भेजना है उसको. वो क्या करेगा? This is called as a fetching. माइक्रोप्रोसेसर के अंदर आ गया ये, वो जो भी यहाँ पे लिखा था. सो दैट केम इनसाइड द माइक्रोप्रोसेसर. नाउ माइक्रोप्रोसेसर विल ट्राई टू डिकोड इट. ओके. सो दैट इज कॉल्ड एज अ डिकोडिंग. ओके. सो लेट अस अज्यूम कि सपोज अभी ऐड करने के लिए इंस्ट्रक्शन दिया है, तो माइक्रोप्रोसेसर क्या करेगा? ऐड करेगा. ओके. तो ऐड करेगा, दैट इज कॉल्ड एज अ एग्जीक्यूटिंग. ओके. तो माइक्रोप्रोसेसर क्या बोलेगा कि यस, ऐड करने के लिए बोला है तो अभी ऐड ही करना पड़ेगा. ऐड इंस्ट्रक्शन है तो वो सबट्रैक्ट नहीं करेगा. ऐड इंस्ट्रक्शन है तो वो मल्टीप्लाई नहीं करेगा. इट विल ऐड. ओके. सो बहुत ही ओबीडियंट है. ओके. सो माइक्रोप्रोसेसर क्या करेगा? सो इट विल एग्जीक्यूट दैट. ऐड करने के लिए बोला है तो ऐड करेगा. ओके. सो पहले क्या करेगा? द फर्स्ट ऑपरेशन इज व्हाटएवर वी आर राइटिंग, व्हाटएवर प्रोग्राम वी आर राइटिंग, दैट विल बी स्टोर. ओके.
Then microprocessor, as soon as I give the execute command, program execute करने के लिए as soon as I give the execute command, what microprocessor will do? Microprocessor will send address to the memory. Okay, ये address पे क्या लिखा है भेजो. Memory क्या है? It follows microprocessor. Okay, whatever microprocessor is giving, whatever order microprocessor is giving, memory is following that. Okay, so memory क्या करेगी? First line पे जो दिया लिखा है, so that will put on the data bus and that will go to microprocessor. This operation is called as fetching. Okay, then microprocessor will decode कि क्या है वो, फर्स्ट लाइन पे क्या लिखा है जो मेरे पास आया है वो क्या है. That is add operation. Okay, so it will add, that is called as a execute. Okay, so this way microprocessor works. I hope you understood it. Yes, student. Yes, ma'am. समझ में आया ना? Okay. Yes, ma'am. So the first one is store, the second one is a fetch, the third one is a decode, and the fourth one is a execute. Okay. So whatever, as microprocessor के पास वो provision नहीं है, whatever program we are writing, that program will be somewhere else. Okay, microprocessor के बाहर है वो. Okay, so that is in the memory. Okay, so microprocessor needs to communicate with memory. Okay, तो microprocessor क्या करेगा? मेमोरी के साथ कम्युनिकेट करेगा, एक करके एक एक इंस्ट्रक्शन अंदर लेगा, उसको समझेगा, उसको डिकोड करेगा. ओके, और फिर क्या करेगा? एग्जीक्यूट करेगा. Got it? So this way microprocessor unit works. Okay, I think we should take a break, small break. Yes, ma'am. Shall we take Yes, ma'am. small break? Yes, ma'am. 5 minutes. Yeah. We'll Okay. come back at 10:55. Yeah. Okay. Sure. Till that time, I think there's a hand raise from Ananya, so you can clear. Yeah. Yes, Ananya. मैम डेटा बस जो है वो मेमोरी से कंट्रोल यूनिट को डेटा सेंड करता है, सो एड्रेस बस एग्जैक्टली क्या करता है? Address bus, actually address bus is a unidirectional. Okay, suppose मैंने बोला ना आपको कि whatever I am writing other that will be in the memory. Okay, और मेमोरी के हर एक लाइन को एड्रेस है. ओके, मेमोरी का हर एक लाइन है, इट हैज अ एड्रेस. ओके, सो माइक्रोप्रोसेसर क्या करता है? व्हाटएवर डेटा वांट्स फ्रॉम द मेमोरी, माइक्रोप्रोसेसर इज गोइंग टू सेंड द एड्रेस टू द मेमोरी. ओके, तो वो एड्रेस कैसे भेजेगा? एड्रेस बस पे भेजता है. What is the function of address bus? Is to carry address. That's it. Okay. Suppose, for example, see, this is your memory. Okay. ये आपका memory है. Okay. But memory has a huge capacity. Okay. So उसके हर एक लाइन पे आप क्या कर सकते हो? डेटा सेव कर सकते हो. हर एक लाइन को क्या है? नंबर है. Okay. अभी ये नंबर क्या है? Let us assume that this number is what? 0 0 0 0 0 0. Okay. So now this address, okay, कौन भेजेगा? माइक्रोप्रोसेसर भेजेगा उसके एड्रेस बस पे. ये किस पे जाएगा? माइक्रोप्रोसेसर के एड्रेस बस पे जाएगा. Now I am saying that 000. Okay, this address bus is what? 20 bit long. Okay, so basically when I am saying this is, let us take 000 की जगह पे 001 लेते हैं, फिर आपके ध्यान में आएगा. Okay, 001. तो ये 20 bits मतलब क्या है? ये 0 है, ये क्या होता है? 0. It is written as 0000. Okay. Then this 0 will be 0000. Then this 0 will be 000 000. Then this 0 will be 0000. And this 1 will be written as 00001. Okay. So this address will be on where? It will be on address bus of the microprocessor. Okay. Now this is 20 bits long. 20 bit मतलब कितने? 20 lines है इसके पास. हर एक लाइन पे जाएगा. पहले लाइन पे जाएगा 1. सॉरी, दूसरे लाइन पे जाएगा 0. तीसरे लाइन पे जाएगा 0. चौथे लाइन पे जाएगा 0. 0 is what? 0 1. ये क्या है? Basically it is a voltage. 1 corresponds to 5 ohm. Okay. And 0 corresponds to 0. ओके, तो ये सारा किस पे बैठेगा? एड्रेस बस. यहाँ पे एड्रेस बस है. ये एड्रेस बस किसके साथ कनेक्टेड है? इट इज कनेक्टेड विथ मेमोरी. ओके, सो दिस विल गो टू फ्रॉम माइक्रोप्रोसेसर टू मेमोरी. ओके, अलोंग विथ दैट माइक्रोप्रोसेसर इज गोइंग टू सेंड सिग्नल टू द मेमोरी. ओके, यहाँ पे जो डेटा है वो क्या करो? रीड करो.
तो यहाँ पे मैंने कुछ तो डेटा रखा हुआ है, ओके, सो वो डेटा रीड करो, तो वो कहाँ पे बैठेगा, सो दैट विल कम टू ऑन डेटा बस, ओके, देयर आर टू काइंड्स ऑफ बसेस, एड्रेस बस एंड डेटा बस. Address bus, the function of address bus is to carry address, the function of data bus is to carry data, okay. तो वो किस पे आएगा, डेटा बस पे आएगा, और वो डेटा बस से किस में जाएगा, माइक्रो प्रोसेसर में जाएगा. Got it? Yes, ma'am. So there are two different lines, okay. The first line carries address, the second line carries data. ठीक है, second group of lines carries data. Got it? Yeah, ma'am. Thank you. Yeah. If you have any doubt, you can ask. मिस एक डाउट था. हाँ, मिस हम लोग को जब इसमें माइक्रो प्रोसेसर्स पर डिप्लोमा सीखा था मिस, तभी कंट्रोल बस भी था. वही ना, that is a part of microprocessor ना. यस मिस. I am talking about microprocessor. Now microprocessor का हर एक यूनिट क्या करता है, that we'll study in detail ना. Control unit क्या करता है. So that's why I'm saying ना, the function of control unit. See, microprocessor has 3 units. Just now we have seen, right? Okay, the first one is. एक minute, huh? Yeah, you can see here, this is ALU, this is control unit, and this is register, okay? That will be inside the microprocessor. You can see here, okay? The function of arithmetic logic unit to perform arithmetic and logical operations. The function of control unit is to control the signals, okay? And then the next is what? Register, okay? So just now we have seen that, यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमने देखा ना, control unit controls the flow of instructions and data throughout the system. Got it? Now followed. Hello. Yes, miss. Who were asking me doubt? Okay. Yes, miss. Yes, miss. Yeah. Okay. Anything else? Ma'am, what is exactly that fetch? Fetch मतलब जाके लेके आना. Okay. So microprocessor क्या बोलेगा? Just now I have explained you ना कि okay. So microprocessor क्या करता है? This is microprocessor. ये आपका microprocessor. ये पूरा आपका microprocessor. Okay. Microprocessor क्या करता है? इसको मेमोरी को बोलता है कि तुम्हारे ये एड्रेस पे एक एड्रेस भेजेगा, तुम्हारे ये एड्रेस पे जो डेटा है वो मुझे दे दो. ओके, मेमोरी क्या करेगा इन रिटर्न? इट विल सेंड दैट डेटा टू माइक्रोप्रोसेसर. ओके, सो दिस इज कॉल्ड एज अ फेचिंग. Means just send the data from memory to control unit. Yes, memory to control unit in sense memory to microprocessor. That is called as a fetching. पर fetching operation में microprocessor needs to send that address. जब तक मेमोरी को एड्रेस नहीं मिलेगा और जब तक इंस्ट्रक्शन नहीं मिलेगा माइक्रोप्रोसेसर से कि मुझे ये डेटा भेज करके, ओके, रीड ऑपरेशन जब तक भेजे बोलेगा नहीं, तब तक वो फेच नहीं होगा. ठीक है, समझे ना. अभी फॉर एग्जांपल लेट अस सी a very simple example I'll give. Okay, so you might have heard villages में देखा होगा कि कुआं है, वहां पे there is a well. Okay, और वेल में क्या करते हैं लोग, पानी निकालना है तो क्या डालते हैं उसके अंदर, एक रस्सी रहेगी और उसको क्या रहता है उसमें, हाँ, बकेट डालते हैं. ओके, बकेट बांधा होता है और वो क्या करता है, वो बकेट उसके अंदर डालते हैं, फिर पानी लेते हैं और उसको पानी निकालते हैं. सो दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ फेचिंग. ओके, मतलब जब तक आप बकेट अंदर नहीं डालोगे तब तक उसमें पानी आएगा क्या, नहीं आएगा. ओके, सो सिमिलरली माइक्रोप्रोसेसर नीड्स टू सेंड एड्रेस, ओके, एज वेल एज इट नीड्स टू सेंड अ सिग्नल की रीड ऑपरेशन, कि ये वहां पे जो डेटा है, मैंने जो तुम्हें एड्रेस भेज रही हूँ, वहां पे जो डेटा स्टोर है वो मुझे भेजो. ये जब तक उसको भेज सिग्नल नहीं मिलता है तब तक मेमोरी is not going to send any data to microprocessor. उसके orders के according काम करेगा. Okay, so that is called as a fetch operation. मतलब जाके लेके आना. That is called as a fetch operation. Got it? Yes, ma'am. मिस डेटा ट्रांसफर सिंक्रोनाइजेशन मेथड में होता है ना? डेटा ट्रांसफर मिस जो डेटा ट्रांसफर होता है मेरा सिंक्रोनाइज ट्रांसमिशन में होता है ना? हाँ,
सिंक्रोनाइजेशन में काम करेगा. Yes, ये all units are working in synchronization only. They have a synchronization in between them. Okay, so there is acknowledgement as well. Okay, कि डेटा आ गया तो acknowledgement, डेटा गया, डेटा करने के लिए request, all these things are there. Request है, then grant है, then acknowledgement है. Okay, so all work in synchronization. Yes, miss.
Shall we start? Yes, ma'am, we can. Yes, Ruthvi ma'am, shall we start? Yes. Is everyone here now at their places? Please raise your hands. Yes, ma'am. Shall I continue? Yes. Just now we concluded that whenever microprocessor wants to communicate with the peripherals, okay? So now you can see here, yeah, okay. So this is a microprocessor which is connected with, this is a microprocessor which is connected with the peripherals, okay? Which are these peripherals? These peripherals are input devices, output devices and memory, okay? So every, सबके साथ कौन-कौन connected रहता है? Address bus भी connected रहता है और data bus भी connected रहता है, okay? So you can see here, this is the data bus, okay? इसको हम बोलेंगे data bus, ओके और इसको हम बोलेंगे एड्रेस बस। एड्रेस बस भी क्या रहता है? कनेक्टेड। लेकिन इधर देखो मतलब शॉर्ट में उन्होंने दोनों डायरेक्शन में दिखा है। सो एड्रेस बस इज व्हाट? इट इज अ यूनिडायरेक्शनल एंड डेटा बस इज व्हाट? इट इज अ बाई डायरेक्शनल। सो यू कैन सी हियर दिस इज द एड्रेस बस। सो एड्रेस बस, द एड्रेस माइक्रोप्रोसेसर एड्रेस भेजता है ना, ओके, बाकी और कोई एड्रेस नहीं भेजता है। सो द इट इज अ यूनिडायरेक्शनल। यूनिडायरेक्शनल मतलब माइक्रोप्रोसेसर से किसके पास रहता है? मेमोरी के पास रहता है, okay? So just now we have discussed that this is the memory unit. Memory unit में क्या रहता है? This is very very important, that's why I am saying you or I am telling you again and again. This is what the memory unit, you can see this is a memory unit. Memory is, it is like a notebook, okay? Notebook के lines रहते हैं, वैसे lines रहते हैं, okay? Now this part is nothing but the index, okay, where the address is written. Now you can see here the first address is, let us assume that the first address is what? 0, 0, 0, 0 and 0, okay? So now you will say why these five things? Basically this is a hex number, okay? हम बाइनरी में इसको कन्वर्ट करेंगे, so it will written as, basically कैसे लिखा जाता है? ये 0 0 0 0, देन ये कैसे लिखा जाएगा? 0 0 0, 4 बार 0, देन ये 0 कैसे लिखा जाएगा? दिस विल बी 0 0 0, ओके, देन दिस विल बी अगेन 0 0 0 and this will be 0. Now count these bits. How many bits will be there? You can see here 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. How many bits? 20 bits, okay? How many bits? 20 bits. तो ये जो आपका एड्रेस बस होता है ना, ये एड्रेस बस कितने लाइंस होते हैं? बेसिकली हमको, मैं ऐसे दिखा रही हूँ आपको, ऐसे करके दिखा रही हूँ, लेकिन बेसिकली कितने लाइंस होते हैं? यहाँ से देखेंगे ना आप, तो लाइंस देखेंगे तो माइक्रोप्रोसेसर से कितने लाइंस ऐसे कनेक्टेड रहते हैं? ऐसे 20 लाइंस कनेक्टेड रहते हैं, ओके? यू कैन सी हियर दीज आर 20 लाइंस। Whenever microprocessor is sending 0 0 0 0, मतलब ये सारे 20 लाइंस पे क्या आ जाएगा? 0 0 0 0 0 वोल्टेज जाएगा। Got it? Okay. Whenever microprocessor, अभी ये 0 0, ये क्या है? 0 0 0 0 0, okay? Let us assume 2, अभी यहाँ पे 2, ये एड्रेस माइक्रोप्रोसेसर को भेजना है, तो माइक्रोप्रोसेसर 2 मतलब कैसे लिखेंगे? यहाँ पे 2 की जगह पे क्या होगा? 1 0 होगा ना। 2 मतलब कैसे लिखते हैं? बाइनरी में 2 कैसे लिखते हैं? 1 0, isn't it? ओके, तो इसके सारे लाइन पे ये यहाँ तक इतने भी लाइंस है, ये कितने लाइंस है टोटल? दीज आर 16 लाइंस, तो 16 लाइंस पे 0 जाएगा, 17 लाइन पे भी 0 जाएगा, 18 लाइन पे भी 0 जाएगा, लेकिन 19th लाइन पे कौन सा सिग्नल जाएगा? 1 जाएगा, ओके? एंड 20th पे क्या जाएगा? 0 जाएगा, ओके? सपोज ये अभी 3 है, माइक्रोप्रोसेसर वांट्स टू सिग्नल सेंड 0 0 0 3, तो 3 मतलब यहाँ पे क्या जाएगा? 1 1 जाएगा। तो इसके जो लास्ट 2 लाइन्स है वहां पे क्या रहेगा? 1 1 रहेगा। Got it? So basically whenever I am saying कि माइक्रोप्रोसेसर
का कितने लाइंस इसके साथ कनेक्टेड रहेंगे 20 लाइंस. So now these lines are designated as A0. The first line is designated as a A0 and the last line is designated as a A19. Okay, कौन सा line रहेगा A19 because it is starting from 0. Okay, so it has a 20 address lines, this microprocessor. See, I am talking about 8086 microprocessor. Okay, आप 8085 माइक्रोप्रोसेसर लेंगे तो उसमें कितने लाइंस रहेंगे 16 लाइंस रहेंगे. ओके, लेकिन सो दिस वे. ओके, सो 8086 में कितने लाइंस है 20 लाइंस. लेकिन एड्रेस बस का फंक्शन क्या रहेगा सेम रहेगा. व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एड्रेस बस? एड्रेस बस इज यूनिडायरेक्शनल. इट कैरीज एड्रेस फ्रॉम माइक्रोप्रोसेसर टू पेरिफेरल्स. ओके, सो वंस अगेन आई रिपीट, एड्रेस लाइंस का फंक्शन है, एड्रेस लाइंस का फंक्शन है, address line is a unidirectional. Okay, it carries address from microprocessor की जो मेमोरी है. So whatever data it is written here. Okay, let us assume that ये जो 0000003 पे जो डेटा है यहाँ पे ऑलरेडी कुछ डेटा से स्टोर है. Okay, let us assume that the data store is FF. Okay, now microprocessor को उसको यहाँ पे क्या लिखा है, so microprocessor wants to read it. Okay, तो microprocessor क्या करेगा, इस पे क्या भेजेगा, ये जो इसका एड्रेस लाइन है, एड्रेस लाइन पे ये एड्रेस भेजेगा. What is that address? 0003. Microprocessor will send that address to memory. At the same time, इसका जो कंट्रोल यूनिट है, again that is related with the microprocessor. ये माइक्रोप्रोसेसर को सिग्नल भेजेगा. क्या सिग्नल भेजेगा? मेमोरी रीड. ओके, कौन सा सिग्नल भेजेगा? मेमोरी रीड. ओके, सो नाउ इन शॉर्ट, माइक्रोप्रोसेसर इज सेइंग टू मेमोरी दैट whatever address I have stored, sorry, I have sent you on the address line. Okay, please send me the data written on that address. Okay, ये एड्रेस पे जो डेटा लिखा हुआ है, कौन लिखा हुआ है? द डेटा इज रिटन स्टोर्ड एज ए FF. ओके, ये जो डेटा लिखा हुआ है वो मुझे भेजो. ओके, इन रिटर्न माइक्रोप्रोसेसर क्या करेगा? माइक्रोप्रोसेसर के पास डेटा लाइन्स है. ओके, सो हाउ मेनी डेटा लाइन्स आर देयर? 8 डेटा लाइन्स आर देयर. ओके, ये FF माइक्रोप्रोसेसर क्या करेगा? The microprocessor will send this FF. Okay, it will keep that data or it will copy this FF on where it will copy? It will copy on the data lines. अभी data lines पे FF copy होता है, मतलब क्या होता है? Basically data lines कितने रहते हैं? There are 8 data lines. Okay, how many data lines? 8 data lines. 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब 8 वायर्स रहते हैं. ओके, नाउ दिस 8 वायर्स आर कनेक्टेड टू माइक्रोप्रोसेसर. ओके, थ्रू मेमोरी. सो व्हेन मैं ये ड्रॉ कर रही हूँ ना, ये दिस आई एम सेइंग डेटा लाइंस. बेसिकली इट इज all 8 lines, okay, which are connected or which has a connection between microprocessor and memory. तो अभी 8 डेटा लाइंस पे FF लिखना है. FF का मतलब क्या है? When I write FF, okay, F का मतलब होता है, can anyone tell me what do you mean by FF? बाइनरी में FF कैसे लिखते हैं? F मतलब yes, yes, perfect. 1 1 1 1 1 1 1 1. Okay, so all will be copied on where it will copied? It will copied on these lines. So this line is called as a D7 line. Okay, and this line is called as a D0 line. Okay, तो माइक्रोप्रोसेसर क्या करेगा? ये 1 1 1 1 इस पे कॉपी करेगा. 1 1 1 1 कॉपी करेगा मतलब क्या है? 1 का मतलब है 1 करस्पॉन्ड्स टू हाउ मच वोल्टेज? 5 वोल्ट. ओके, कितना वोल्टेज? 5 वोल्ट. सो सारे लाइन पे कितना वोल्टेज जाएगा? 5 वोल्ट जाएगा. गॉट इट? ओके, इट विल गो टू माइक्रोप्रोसेसर. फिर वो कहाँ पे स्टोर होगा? माइक्रोप्रोसेसर के बाद अंदर जाएगा. ओके, सो इट विल स्टोर देयर इन द इंस्ट्रक्शन रजिस्टर. ओके, और वहां पे क्या होगा? वो माइक्रोप्रोसेसर क्या करेगा? उसको डिकोड करेगा. ओके, सो डिकोडिंग के बाद इट विल अंडरस्टैंड क्या करना है एंड देन इट विल एग्जीक्यूट. Okay, so this way microprocessor performs. I hope you understood what you mean by fetching, what is a function of address line, what is a function of data lines. समझ में आया सबको? किसी को डाउट है? प्लीज यू कैन आस्क. मैम, हाँ,
इधर वो माइक्रो प्रोसेसर बार बार मेमोरी यूनिट को पूछता रहता है कि कौन से इसमें क्या क्या है, मतलब हर बार चेक करता रहता है हर एक सेकंड कि कौन से इसमें, क्योंकि वो ऐसा स्पेसिफिक के लिए उसको कैसे पता चलेगा कि इसमें वही जो है जो रिक्वायर्ड है। तो Yes, okay, right, okay. So I am writing a program, okay. मैं कुछ प्रोग्राम लिखूंगी, okay. वो प्रोग्राम मैं कहाँ लिखूंगी? I will write in the mail, okay. I know कि कौन कौन से एड्रेसेस होते हैं. I know it starts from 0. मतलब मुझे मालूम है कि नोटबुक का 0 नंबर लाइन से 100 नंबर तक आपको यूज करना है. So now I know कि कौन से लाइन पे मैंने प्रोग्राम लिखा है. Let us assume मेरा मन है कि I will write start from 25th line, okay. तो मेरा स्टार्टिंग एड्रेस क्या हुआ उसका, मतलब एड्रेस क्या हुआ? 000. लेट अस अज्यूम 25 नहीं होगा, 25 इज अ हेक्स नंबर, पर ठीक है, ओके. यहाँ पे मैंने प्रोग्राम लिखा हुआ है, ओके. सो व्हेनेवर आई एम गिविंग एग्जीक्यूट कमांड, एट दैट टाइम आई विल गिव द गो एग्जीक्यूट 000025. तो माइक्रो प्रोसेसर को समझेगा कि प्रोग्राम कहाँ लिखा है. तो प्रोग्राम इज रिटन एट वेयर इट हैज रिटन एट 00025. ओके. सो माइक्रो प्रोसेसर क्या बोलेगा? अच्छा, प्रोग्राम कहाँ लिखा है? 00025 पे लिखा है, ओके. वहां से प्रोग्राम है, ओके. नाउ माइक्रो प्रोसेसर विल से दैट, हाँ देखो तो क्या लिखा है मैंने 00025 पे, पहला इंस्ट्रक्शन कौन सा है, ओके. प्रोग्राम, see, whenever I am giving execute command, I will write execute, go execute 00025. Why I am writing 25? Because I have written program at 25. Okay. If I am writing program at 30, then I will give command execute go execute 0030. Okay. So जहां पे मैंने प्रोग्राम लिखा है वही मैं एग्जीक्यूशन कमांड दूं. Okay, so that now the microprocessor will understand. Okay, ये कमांड से माइक्रोप्रोसेसर अंडरस्टैंड करेगा कि प्रोग्राम आपका क्या है. योर प्रोग्राम इज एट 00025. सो इट विल पहला एड्रेस भेजेगा. ये कौन सा पहला एड्रेस भेजेगा? इट विल सेंड फर्स्ट एड्रेस 0000025. ओके, वहां पे मेरा फर्स्ट इंस्ट्रक्शन. ओके, सो इट विल टेक दैट फर्स्ट इंस्ट्रक्शन. ओके, देन आफ्टर दैट देयर इज वन प्रोग्राम counter. Okay, microprocessor के अंदर there is one program counter. Okay, so now what is the function of that program counter? The function of program counter is to increment by 1, okay, or point the next address, okay, when current instruction is executing. Okay, अभी current instruction कौन सी execute हो रही है? 25 वाली. जब execution चल रहा है तो ये program counter क्या लोड करके रखता है? 0000026. ओके, और वही किस पे कॉपी होता है? दैट विल कॉपीड ऑन द एड्रेस बस. गॉट इट? फिर नेक्स्ट ये जब एग्जीक्यूट होता है तब नेक्स्ट एड्रेस कौन सा है? 27. सो दिस इज द प्रोग्राम काउंटर व्हिच कीप्स द ट्रैक ऑफ द प्रोग्राम, एंड दैट इज द पार्ट ऑफ माइक्रोप्रोसेसर. Now in next chapter we are going to learn, we are going to understand how, what will be the function of each block of microprocessor. At that time you will come to know. तो just मोटा मोटा मैंने ऑपरेशन बताए कि माइक्रोप्रोसेसर क्या करता है. एक के बाद एक इंस्ट्रक्शन को अंदर बुलाता है, समझता है, डिकोड करता है उसको, एंड एग्जीक्यूट करता है. गॉट इट? ऐड करने का है तो ऐड करो, मल्टीप्लाई करने का है तो मल्टीप्लाई करेगा, सब्ट्रैक्ट करने का है तो सब्ट्रैक्ट करो, इंक्रीमेंट एक से करना है इंक्रीमेंट तो एक से इंक्रीमेंट करो. सो ऑल इट विल अंडरस्टैंड. ओके, दैट अंडरस्टैंडिंग इज कॉल्ड एज अ डिकोड. ओके, दैट इज कॉल्ड एज अ डिकोडिंग. एंड देन उसके बाद क्या करेगा? एग्जीक्यूट. गॉट इट? Yes, समझा? यस मैम. Okay, shall I move ahead? और किसी को डाउट है? Okay. So just now we completed this. Okay. So now these are some of the important features of the microprocessor. The microprocessor is cost effective. The microprocessor chips are available in low cost. Okay. That's why the cost of any project is low. It's because of low costing of this microprocessor. Then size, okay, the microprocessor is a small side chip, hence it is portable. आप माइक्रोप्रोसेसर को उठा के कहीं पर भी लेके जा सकते हो. Then it has a low power consumption. It is a digital device, okay, and it uses metal oxide semiconductor technology. So that's why it has a low power consumption. Then versatility. Basically, the microprocessors are versatile as we can use the same chip in number of applications by configuring the software programs. Program change करो, application
के साथ तुम उसको वही सेम चिप को तुम क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो. And reliability, that is very very important. The failure rate is very very small. Okay, so that's why it is very very low, hence it is reliable. Okay, so microprocessor really it is a brain of computer. Okay, and it is very very useful thing to the mankind. माइक्रोप्रोसेसर नहीं होता था ना, आपका ऑटोमेशन होता ही नहीं था. ओके, ये रोबोट्स नहीं बनेंगे. आप सिंपल कार में भी देखिए ना, कार में भी कितने सारे आजकल हाई एंडेड कार्स आ रहे हैं, हाई फीचर्ड कार्स आ रहे हैं, उसमें भी कितने एप्लीकेशंस है. आपके कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स में देखो आप, वहां पर भी माइक्रो प्रोसेसर है. आपके फोन्स देखो. ओके, एवरीवेयर माइक्रो प्रोसेसर एंड माइक्रो कंट्रोलर इज देयर. ओके, सो द ऑटोमेशन पार्ट इज वेरी वेरी important, and it's possible because of these features of microprocessor. Okay, so this is nothing but the history of microprocessor. The first generation came in 1971 to 73, then second generation 73 to 78. Okay, so in first generation it was a 4004. That is a very basic microprocessor, and its clock speed was 108 kilohertz. Okay, अभी आप फोन खरीदने जाओगे तो आप क्या देखते हो, उसका स्पीड देखते हो, कैमरा देखते हो. ओके, सो स्पीड इज an important thing. ओके, एंड इट डिपेंड्स अपॉन द क्लॉक स्पीड ऑफ द माइक्रोप्रोसेसर. ठीक है, स्पीड मतलब क्या, कितने सारे इंस्ट्रक्शंस, प्रोसेसिंग पीरियड, प्रोसेसिंग टाइम. ओके, इंस्ट्रक्शन प्रोसेसिंग टाइम. Okay, that is important. So that is based on your clock speed. Okay, so second generation came in 1973 to 78. Then that was a Intel का IC था, वो 8085 था. Okay, लेकिन इसका Motorola का 6800 है. Then इसका third generation 79 to 80. So 8086 microprocessor. Okay, so now we are going to learn 8086 microprocessor. But the students, you will say that very basic microprocessor we are going to study. Okay, what's the use? Nowadays, so high-ended processors are there. Okay, but basically this processor is there to understand address bus क्या है, data bus क्या है, ALU क्या होता है, control units क्या होते हैं, program counters क्या होते हैं, registers का मतलब क्या होता है, how microprocessor communicate with external world. Okay, so to understand those kind of things, the basic processor has taken, and that is 8086 microprocessor. Okay, for our study purposes. Okay, एक बार आप microprocessor समझ गए, microprocessor की terminology समझ गए, so then that is same for all microprocessor. The only difference is that nowadays the advanced kind of features are added in the microprocessor. But आप address bus पूछोगे तो address bus will remain same for all. If you ask data bus, the function will remain same for all. Okay, it will not change. आप basic हो या high-ended microprocessor. ठीक है? Then fourth generation, so that came in 81 to 95. Okay, so that is 8086 के ही advance है ये 80386. Intel company, there were two important companies. Okay, there were two main companies, Intel and this Motorola. So these two companies were having their series. Okay, the first it was 4004, then after that 8085, then after that 8086, then 8080, 186, 286, then 386. Okay, then after that Pentium. Okay, so then the fifth generation, that is from 1995. Okay, you can see here various data bus. जो 4004 microprocessor था, it was having only 4 buses. 8008 it was having 8 buses. Then 8085 8 buses. Then 8086 it's a 16 bus. Then 80386 it's a 32 bit, and then 32 buses it was having. Okay, so that's why it was 32 bit. Then Pentium again 32 bit. Okay, so this way various processors. Okay, now memory. Okay, so now we are going to study the block diagram of a microprocessor based system or microcomputer. So memory में क्या है? There are, you can see RAM and ROM. Okay, RAM is nothing but read-write memory. You can store, you can write, and you can read data from the memory. ROM is what read-only memory. Okay, that you have earlier studied. Okay, so I'm not going to take it in detail. Okay, so these are various types. Then after that, SRAM, DRAM, you might be knowing static RAM, then dynamic RAM. Okay, then this is about ROM. Then ROM, PROM, EEPROM. Okay, so
these are the things. Okay. So PROM is nothing but programmed by user, then programmable read-only memory, then erasable programmable read memory, then electrically erasable programmable read-only memory. Okay, so you can read it. So that is very easy. Okay, so this is a difference, RAM and ROM में. The temporary storage in RAM, then permanent storage in ROM, then store in megabytes, store in gigabytes, it's volatile, it's non-volatile. Okay, normal operations, then startup. Matlab monitor kind of programs are written in ROM, okay? So then the concept of bus, I have already explained you the address bus as well as data bus. What is address bus, what is data bus, and what is control bus. The function of address bus, as I explained you, it's a unidirectional, transmits the address signals emitted from CPU, that is microprocessor to memory and IO ports. I said that microprocessor to peripherals. Whenever I am saying microprocessor to peripherals, matlab CPU to memory and input output devices. Okay. Then data bus, it's a bidirectional. Okay. It transfers data from either from CPU to memory and IO, or from memory and IO to CPU. Then control bus, it is used to transmit the control signals such as read, write, interrupt control signals. Okay. Then these are nothing but the input devices: keyboard, mouse, then joystick, you might be knowing, mic, then barcode reader, then stylus pen, web camera. So these are some of the input devices you might be knowing. Yes. Interrupt data signal मतलब इंटरप्ट क्या होता है, दैट आई विल एक्सप्लेन. ओके, सो इंटरप्ट मतलब माइक्रोप्रोसेसर का जब व्हेनेवर माइक्रोप्रोसेसर इज परफॉर्मिंग नॉर्मल फंक्शन, ओके, एंड सम ऑफ द एक्सटर्नल पेरिफेरल इज कनेक्टेड, okay, to this interrupt line, okay, and if it is requesting for the urgent service, okay, at that time the signal is sent on the interrupt line. Okay, for example, अभी temperature monitoring system मैंने रूम में बिठाया है. Okay, at the same time there is a smoke detector. Okay, if I have connected a smoke detector on the interrupt line of the microprocessor and the smoke is detected, okay, so then it will interrupt microprocessor that the smoke is detected. Okay, so now I need to take the immediate action. So in that case I have to ring the bell. Okay, so I need to do the provisions accordingly. So whenever microprocessor is performing the normal operation and if the external peripheral is requesting for the service, at that time interrupt is enabled. Okay, so what is that I will explain. Okay, so for example मैं अभी लेक्चर ले रही हूँ, okay, और प्रिंसिपल ऑफिस से मैसेज आता है कि अर्जेंटली आपको नीचे बुलाया है. So in that case what will happen, the peon will interrupt me, na? Okay, in between. So in that case I need to provide that service. Okay, or sometimes if I am delivering a lecture and suppose some student have a doubt, so in that case student will interrupt me. The normal operation is going on and someone has interrupted. In that case I need to provide the service. Okay, so now that facility is there to deny request or to accept request. Okay, so that facility is always there with the microprocessor. So that we'll study in detail in the next chapter. Okay, so at that time we'll explain you, but at least mota mota समझ में आ गया कि what do you mean by interrupt? Yes ma'am. Yeah. Okay, so these are some of the output devices. You can see here speaker, monitor, headphones, printers, projectors. Okay, so these are some of the output devices, okay, which are there to display the output processed from microprocessor. Okay, so the as I said, an input device sends information to a computer system. Input device only allow for input of data to a computer. Example of input devices includes following. Then output devices, again it is very easy. The output devices is an peripheral that receives the data from the computer, usually for display, projection and physical reproduction. Okay, so monitor kya hai, projector kya hai, speaker kya hai, you all are knowing. I'm not going to waste time on that. Okay, so these are some of the practice questions. So important practice questions are: what is microprocessor? See, these questions will be there in your Viva. Huh? What is microprocessor? What are the basic units of microprocessor? Why data bus is bidirectional? Okay, draw the functional block diagram of microcomputer and have explained the function of each back. Why address bus is unidirectional? State important features of microprocessor, various applications of microprocessor, and different types of memories. Okay, so these are some of the practice questions. Okay, and after that we are going to learn the important topic, and that is nothing but assembly language. Okay, so assembly language,
the objective is to differentiate between high level language and low level language, okay, and between assembler and compiler. Okay, so assembly language. Okay, so now you might be knowing language C. Okay, so C is called as a high level language. Why it is called as a high level language? Because the English like words, okay, are used in this high level language. Okay, whereas assembly language is called as a, it is called as a low level language. Okay, why it is called as a low level language? Because the mnemonics or shorthand form of instructions, okay, shorthand forms of instructions are used, okay, to write the program. Hence it is called as a assembly language. Okay, for example abhi maine add a, okay, so add a का मतलब क्या है? एड ए का मतलब क्या है कि रजिस्टर ए में जो भी कंटेंट्स है, सॉरी एड बी का मतलब क्या है? द रजिस्टर बी में जो भी कंटेंट्स है वो किसके साथ ऐड करो? बाय डिफॉल्ट किसके साथ ऐड करो? अक्यूमुलेटर के साथ. अक्यूमुलेटर मतलब रजिस्टर ए के साथ. So add word is used, okay, it is a short form of instruction addition. Okay, so English like word addition, hence it is called as a assembly language. Okay, your microprocessor doesn't understand assembly language. Okay, it is for our sake of convenience. Okay, लेकिन add के related एक कोड होता है. Okay, add के related कोड है. Let us assume add का कोड है क्या है? 23. तो तुम्हारा माइक्रो प्रोसेसर है क्या अंडरस्टैंड करता है 23 का मतलब क्या करना है? ऐड करना है. ओके, बट ऐड उसको मैंने दिया माइक्रो प्रोसेसर को, तो माइक्रो प्रोसेसर को कुछ समझ में नहीं आएगा. इट विल बी बाउंसर फॉर माइक्रो प्रोसेसर. ओके, लेकिन वही मैंने 23 दिया, देन माइक्रो प्रोसेसर विल अंडरस्टैंड. बट इट इज नॉट इजी फॉर अस टू रिमेम्बर नंबर्स. ओके, पर मुझे ऐड ध्यान में रहेगा. ऐड का मतलब एडिशन करना है, लेकिन 23 मतलब एडिशन करना है, दैट इज बिट डिफिकल्ट. ओके, सो इन दैट केस फॉर सेक ऑफ कन्वीनियंस, ओके, वी आर यूजिंग सम निमोनिक्स, ओके, फॉर ऑपरेशंस, एंड दैट इज कॉल्ड एज अ असेंबली लैंग्वेज. तो पहले क्या रहेगा? सो यू कैन सी हियर आई एम ह्यूमन. ओके, सो ह्यूमन बीइंग के लिए क्या है? असेंबली लैंग्वेज. निमोनिक्स है. ओके, लेकिन ये कौन है? मेरा माइक्रो प्रोसेसर. माइक्रो प्रोसेसर को मालूम नहीं है ये निमोनिक्स क्या है. माइक्रो प्रोसेसर के लिए क्या है? कोड है. ओके, तो दिस इज फॉर माई सेक ऑफ कन्वीनियंस. माइक्रो प्रोसेसर के साथ काम करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? उसके लैंग्वेज में बात करना पड़ेगा ना. उसको 23 मुझे देना पड़ेगा ऐड करने के लिए. ठीक है, मैं ऐड लिखूंगी तो वो नहीं लेगा. सो व्हाट इज रिक्वायर्ड? We need to convert this assembly language program to machine language. This 23 is called as a machine language, and this is called as a assembly language. 23 भी microprocessor 23 नहीं लेता है. वो क्या करेगा? 23 को it is written inside the machine. कैसे लिखा जाएगा? 0 0 0 1 0, and then this 3 will be written as 0 0 0 1 1. Okay, so this is 23. So this will go to whom? This will go to microprocessor. Okay, मतलब ये ऐड मैं बोल रही हूँ प्रोग्राम में, आई एम राइटिंग ऐड. ओके, बट एज सुन एज आई प्लेस एंटर की इन असेंबलर, व्हाट विल हैपन? दिस ऐड करस्पॉन्ड्स टू 23. ओके, ऐड किस में कन्वर्ट होगा? 23 में कन्वर्ट होगा. ओके, a machine language. Okay, and the program which and the device which converts this assembly language. What is assembly language? Add to machine language. What is machine language? This 23 is called as a assembler. Is called as a assembler. I hope you understood. Any doubt? Any doubt? No, ma'am. No, ma'am. Yes, yes. Someone was asking. Yes. Okay. So हमारे लिए कौन सा लैंग्वेज है? फॉर आवर सेक ऑफ कन्वीनियंस विल राइट प्रोग्राम इन व्हाट? असेंबली लैंग्वेज. ओके, बट द सेम प्रोग्राम आई कैन नॉट गिव इट टू माइक्रोप्रोसेसर. बिफोर दैट व्हाट इज रिक्वायर्ड? आई नीड टू सेंड इट थ्रू असेंबलर. मुझे क्या करना पड़ेगा? असेंबलर के पास जाना पड़ेगा. ओके, मैं अपना प्रोग्राम लिखूंगी, किसको दूंगी? असेंबलर को दूंगी. देन असेंबलर क्या करेगा? उसको कन्वर्ट करेगा किसमें? मशीन में, मशीन कोड में, मशीन लैंग्वेज में, and that machine language is given to microprocessor. Got it? Okay. So this is called as a low level language.
Okay. So now what are the advantages and disadvantages? The advantages and disadvantages. Advantages of assembly language: it is easier to understand, saves a lot of time and efforts to the programmer, easier to correct errors, modify program instructions. Assembly language has the same efficiency of execution as the machine level language. Then assembly language is machine dependent. Disadvantage है, program written for computer might not run on the other computer for different hardware configuration. Okay. So these are some of the things. मतलब 8086 के लिए अलग assembly language है, 8085 के लिए अलग assembly language है. Okay. Then आप 8051 microcontroller देखेंगे तो उसका अलग assembly language है. Okay. So these मतलब these assembly language is because of the instruction set of these microprocessors. So सबके लिए अलग अलग है. Got it? Okay. Then high level language. High level language are programming languages that look like natural language text. They make programming easier and more abstract. The programmer does not need to come up with the detailed machine instructions. Programs are machine dependent. They can run on different hardware platforms. Got it? मतलब high level language जैसे for example तुम्हारा C language है, then your Java, then जो भी code है C++ है. So we can basic Pascal, COBOL. Okay, so all these languages are called as a high level language. Okay, so this is the difference between. Okay, so now you can see assembly language. It uses alphanumeric symbols. Uses alphanumeric symbols will be known as a mnemonic codes and can have maximum up to 5 letters. Combination, for example, add for addition. High level language uses programming languages that look like natural language text. No formal structure. Okay, assembly language का कुछ formal structure नहीं है, इसमें कोई for loop वगैरह नहीं होता है. Okay, but it has a formal structure. Okay, इसका for loop रहता है, while loop रहता है. Okay, so अलग-अलग structures है इसके. Then executable code is small, produces too much executable code and may not execute efficiently. It require इसका जो size है, इसका space है, वो क्या है, fewer memory space comparing with high level language. Large memory space is required and precise control of hardware, not specific control is possible. Okay, so these are some of the advantages and disadvantages of assembly language. Okay, and high level language. Then next is compiler. Okay, specific program that produces a statement written in a particular programming language and it turns them into machine language or code that a computer processor uses is called as a compiler. Okay, the process of converting high level programming language into machine language is known as compilation. Okay, so high level language, again the same thing. Okay, you write the program in C, you write program in COBOL, you write the program in BASIC, C++, Java. The important thing is that you need to convert that program into machine. Okay, then only the microprocessor will execute. Okay, CPU will execute that. Okay, so what in that case, what is required? In that case, you require that this program, special program that you require to convert whatever you have written in high level language. Okay, you need to convert it into machine language, and that is possible with the help of compiler. So basically, compiler is what? It is a special program that processes statements written in a particular programming languages and turns them into machine language. So the function of compiler is to convert high level language program into machine language. Okay, so that is called as a compiler. Okay. Then assembler. Assembler का मतलब क्या है? Assembler का क्या convert assembly language into machine language. So that is called as a assembler. ठीक है? Okay. So what is the difference between assembler and compiler? The difference between assembler and compiler is that it generates, in case of compiler, compiles code and convert it into machine, whereas assembler, okay, assembly language to machine language, then generates assembly language code or directly the executable code. There are two possibilities. Either it will convert into assembly language and then again assembly language you need to convert it into machine language. Okay, or directly it will convert into executable code. Okay, then it generates the read-loadable machine code. Okay, then compiler. Compiler के लिए input क्या रहता है? Pre-processed source code रहता है.
इसमें क्या रहता है, असेंबली लैंग्वेज कोड रहता है। मतलब इनपुट मतलब क्या है, हाई लेवल लैंग्वेज में जो कोड लिखा है that is called as a pre-processed source code. Okay, so that will be the input to the compiler, whereas assembler में assembly language will be the input to the compiler. Okay, and output क्या है, assembly code generated by the compiler is a mnemonics version of machine code, unreloadable machine code. दोनों केस में output आपका क्या आएगा, मशीन कोड आएगा। ओके, लेकिन कंपाइलर में क्या हो सकता है, असेंबली कोड हो सकता है। असेंबलर में क्या होगा, इट विल बी अ मशीन कोड विच विल बी इन बाइनरी कोड। ओके, फॉर एग्जांपल मैंने 23 एग्जांपल दिया ना, लेट अस टेक द एग्जांपल। फॉर एग्जांपल, इफ द इंस्ट्रक्शन इज व्हाट, एडिशन। ओके, दिस इज HLL। ओके, दैट इज हाई लेवल लैंग्वेज। असेंबली में क्या होगा, ऐड, और मशीन में क्या होगा, 23। बट इट, सो एक तो ये क्या करेगा, डायरेक्टली 23 कन्वर्ट करेगा, अदरवाइज इट विल कन्वर्ट ऐड एंड देन इट विल कन्वर्ट टू 23। वी नीड टू कन्वर्ट इट टू 23। ओके, सो दिस हैपेंस इन कंपाइलर। whereas in assembler में क्या होगा, इनपुट विल बी दिस ऐड एंड इट विल बी कन्वर्टेड टू 23। बट इट, okay, so this is the practice question. What are the machine language and assembly language programs? Differentiate between assembler and compiler. Okay, so this completes your chapter number 1. If you have, this chapter is very small chapter. Okay, the weightage is 8 marks, 5 to 8 marks. Okay, I'll stop share. If you have any doubt, you can ask. Otherwise, we ma'am. Okay, ma'am. If students don't have any doubt, we can end. Yes, student, if you have any doubt, you can write in the chat box. You can talk. Yeah, yes. Ma'am, you will be sharing these